हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज के इस लेक्चर से रिलेटेड एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो इस लेक्चर को एंड तक देखना बहुत ही ज़रूरी है। आज के इस लेक्चर में हम लोग सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स और स्टैंडर्ड प्रीफिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड क्वांटिटी एंड डिराइव्ड यूनिट के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम लोगों को सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स के बारे में जानना है। सिस्टम्स ऑफ यूनिट क्या होता है ये समझना बहुत ही जरूरी है। स्टूडेंट्स, यूनिट्स का ऐसा कंप्लीट सेट जिससे कि सारे फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर किया जा सके उसे हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। इट मीन्स कि a complete set of units which is used to measure all the fundamental quantities as well as derived physical quantities are called systems of unit. So we will write it. Complete set of units which are used to measure all physical quantities are called system of units. स्टूडेंट्स, बेसिकली हम लोगों के पास 4 सिस्टम्स हैं यूनिट्स के, जिसमें सबसे पहला है सीबीएस सिस्टम, तब दूसरा एफपीएस सिस्टम, तीसरा एमकेएस system, and the fourth and the most important system is SI system. Now, in CGS system, C stands for centimeter, which is the unit of length. It means in CGS system, the unit of length is taken to be centimeter. It means C stands for centimeter and the unit of mass is taken to be gram, and the unit of time is taken in second. So S for second, and this CGS system was used in France. So we can say that the CGS system is a regional system of the units and it is basically used in France. And in FPS system, the unit of length is foot. Unit of length is what? Foot. And unit of mass is pound. And unit of time is second. And this system is basically used in Britain. It means this is also a regional system of units.
And the third one is MK system, in which the unit of length is meter, unit of mass is kg, it means kilogram, K for kilogram, and unit of time is second. But student, all these three units are either a regional units, or we can say that these units cannot be scientifically well defined. So we have to choose the units which can be universally accepted and scientifically defined. Listen to me again very carefully. We have to choose such a unit which can be universally accepted and scientifically defined and easy to reproduce. यानी कि हम लोग को एक ऐसा सिस्टम्स ऑफ यूनिट चाहिए, यानी ऐसे यूनिट्स चाहिए जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो, साइंटिफिकली जिसको डिफाइन किया जा सकता हो और हम लोग उसको आसानी से रिप्रोड्यूस कर सकते थे. देन SI unit of system were taken and accepted universally. So in this SI system, SI stands for System International D unit, which is taken from the French language, and we abbreviate it as SI system. Here we will define the standard units of all the fundamental physical quantities, and we know that there are 7 physical fundamental quantities, and in SI system we will define the units of all these 7 fundamental physical quantities, and SI system is universally accepted. So we will write the tables for the physical quantities in the SI system and their units and the symbols as well. So in SI system, SI systems of units, we will write with fundamental physical quantity, fundamental physical quantities, next their SI unit, next their symbols. So number 1 is length. So the SI unit of length is meter, and we write it as a small m. Next, number 2, mass. The SI unit of mass is kilogram, and we write it as kg. Third, time. The SI unit of time is second, and we write it as. Fourth, temperature, and the SI unit of temperature is Kelvin, and we write it capital K. Fifth, electric current, and the SI unit of electric current is ampere, and we write it as A. Next, number 6, luminous intensity, and the SI unit of luminous intensity is candela,
and we write it as CD. And the last one and the seventh fundamental physical quantity is amount of matter, or we can also say that substance. Amount of matter is written as, can be calculated in mole. It means SI unit of amount of matter is mole, and we write it MOL. Now, students, you you can take the screenshot of all this and write it down in your copy. Student, these three systems are not Students, these three systems are sufficient when we study about the mechanics. But when we go in the higher classes where we have to study the dynamics, electromagnetics, electricity, then these three systems are insufficient to measure such a physical quantities. So we need a system of units which can be used in thermodynamics, electricity, electromagnetics, and other branches of physics. Now we will study about the standard prefix of the systems. फिजिक्स में हम लोगों को कभी कभी एक बहुत ही बड़े अमाउंट को मेजर करना पड़ता है, तो कभी कभी हम लोगों को एक बहुत ही छोटे अमाउंट को मेजर करना पड़ता है। सपोज कि अगर हम लोगों को अर्थ से सन का डिस्टेंस मेजर करना हो, तो हम लोग अगर मीटर में उस डिस्टेंस को पढ़ेंगे तो वो काफी बड़ा हो जाएगा। और अगर हम लोग को किसी एटम के मास के बारे में जानना हो, तो वो यूनिट अगर हम लोग केजी में मेजर करना चाहें, तो केजी एक एटम के मास के कंपैरिजन में एक बहुत ही बड़ा यूनिट हो जाएगा। ऐसे सिचुएशंस में हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट्स के आगे कुछ प्रीफिक्स लगाते हैं, जिसे हम लोग स्टैंडर्ड प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स का मतलब ये होता है पहले लगाया जाने वाला वर्ड। तो हम लोग SI यूनिट्स के आगे कुछ प्रीफिक्स लगाते हैं, जो कि हम लोग को जब बहुत ही बड़े और बहुत ही छोटे अमाउंट को मेजर करने की जरूरत पड़ती है। तो अब हम लोग स्टैंडर्ड प्रीफिक्स के बारे में जानेंगे। इस बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा जा सकता है। मान लेते हैं कि पटना से दिल्ली का डिस्टेंस लगभग this much meter है। So it is very convenient and compact to write this in kilometer, and we will get 1000 kilometer. So it becomes very compact to write down the distance between the Delhi and the Patna. Now students, what unit you will choose to measure the gold or the ornament which is made up of gold? So you will choose a smaller unit to measure the amount of gold, that is milligram. Now we will study about that all the prefix in the power of 10. Students, जब हम लोग को किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को के छोटे अमाउंट को मेजर करना होता है, तो हम लोग 10 के माइनस इट मीन्स नेगेटिव पावर में लिखते हैं। और अगर हम लोगों को किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के एक बड़े अमाउंट को मेजर करना होता है, तो हम लोग 10 के पॉजिटिव पावर में लिखते हैं। मैंने ये पहले से टेबल बना रखा है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपके रेफरेंस बुक में भी ये टेबल दिया होगा। इस टेबल को हम लोग एक बार समझ लेते हैं और उसके बाद ये रिमेम्बर कर लेंगे आप लोग। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसे याद कर ही लेना है। मे बी इस टेबल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
सकता है आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में। स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि अगर हम लोगों को लेंथ का स्मॉलर यूनिट मेजर करना है, इट मीन्स किसका मेजर करना है, लेंथ का। तो मान लेते हैं कि हम लोग जानते हैं कि लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर, और अगर हम लोग 1 मीटर के स्मॉलर यूनिट की बात करें तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इसी में से छोटे यूनिट के बारे में लिखेंगे। तो अगर हम लोग लिखें 10 मीटर का 10 टाइम्स छोटा यूनिट, देन we will write it 1 deci. It means deci, and the symbol for deci is small d, so we will write 1 decimeter, and in full form we can write decimeter. And if we talk about the very smaller unit of the length, which can be picometer, femtometer, ottometer, then let's take the example of picometer. It means picometer is the unit of what, length. If we take the example of length, and the length, SI unit of length is meter, then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, then this much a smaller amount of length is considered to be 1 picometer. So we will write 1 pico, the symbol of pico is P, so we will write 1 pico, and the symbol of meter is M. It means कि 1 picometer is equal to this much meter, and we can write it 10 to the power minus 12 meter. It means 1 picometer बराबर, और 1 picometer is equals to 10 to the power minus 12 meter. Now we can take the example of mass also. If we have to measure a small amount of mass, we can measure it in milli. For example, if we will take the example of mass, suppose we are talking about the mass of a very small quantity, then suppose I have considered milli, then we can write 1 by 1000, it means 1000 times smaller than 1 gram, then it can be considered to be 1 10 to the power minus 3 gram. Now student, let's understand the table again. Deci is the symbol for the deci is what, D, and the power is minus 1. Centi, the power region symbol is C, power is minus 2. Milli, symbol is M, power is minus 3. Micro, the symbol is this stands for micro, and power is minus 6. Nano, the symbol for the nano is N, and the power is minus 9. Pico, and the symbol of pico is a small p, and the power is minus 12. Femto, symbol is F, power is what, minus 15. Otto, symbol is A, and power is minus 10. Jetto, Z, minus 12, minus 21. Yocto, power is minus 24, it is written by Y. And we can consider the larger or the big amount of physical quantities which is measured in the power of 10 with positive sign. Okay student, deca, hecto, kilo, giga, mega, tera, peta, hexa, zeta, iota. Student, these symbols are very important for your future and as well as for your upcoming examination. You should remember these tables by taking the screenshot, and you can also search it in the book for this. So student, आज के इस लेक्चर में इतना ही। जल्द मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खूब पढ़िए और अपने परिवार के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन कीजिए। जय हिंद।